Please convey to your friends to join the class immediately at 9:15. I'm going to start the lecture. सर इससे पहले वाला भी नहीं हुआ ये जॉइंट स्टेट एंटरप्रेन्योर जॉइंट एंटरप्रेन्योर This classification based on Danoff, I think so. We had covered it up. ये हो गया था सर. Okay, so let's start it from here. Capital ownership, no issues with that. Okay, so guys, welcome to the class, and so we are pursuing with that particular course that is about the entrepreneurship, and in this particular lecture, we are studying continuing with the topic that is the entrepreneurship classification that on the various bases. So the sixth way for the classification of entrepreneur is based on the capital ownership. The first one is the private entrepreneur. Private entrepreneur is about that any person or a group of person who manage out their financial resources, who manage out the setting up their business, those earning profits from their business, those people are the private entrepreneurs. When an individual or a group of individuals set up an enterprise, arrange finance, bear the risk, and adopt the latest techniques in their business with the intentions to earn maximum profit, he or the group is known as the private entrepreneurs. जो खुद से अपनी सारी चीज़ों को मैनेज आउट करेंगे, फाइनेंस अरेंज करेंगे, रिस्क बियर करेंगे, अडॉप्ट करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टू अर्न द मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेवल ऑफ द प्रॉफिट्स, those are the private entrepreneurs. Next is state entrepreneur. As the name indicates, state entrepreneur means the trading or the industrial ventures undertaken by the state and the government itself. The persons entrepreneurs are those that who are involved in the business of trading from import and export, or the industrial itself organizations are there which are being governed under by the state or the government itself. Those are the state entrepreneurs. Next one is joint entrepreneurs. Joint entrepreneurs means the combination of both. The combination of both means the private entrepreneur and the state entrepreneurs who joins hand to run an organization that becomes the joint entrepreneurs. ऐसी बहुत सी organizations है जो jointly workout करती हैं, जिन companies में जो material आता है वो government उन पे subsidies देती है and they run out their organization on that basis. So this is how the joint entrepreneurs works. Next is according to the gender and age, the classification of entrepreneurs is been done. So first one is man entrepreneur, woman entrepreneur, young entrepreneur, old entrepreneurs, and the middle-aged entrepreneurs. I think you can describe these particular parts of the entrepreneurs because that's nothing. It's basis on the gender and the age itself. So a general description can be given on these particular ones. Next one is according to the urban area and the rural area. So on the basis of areas, entrepreneurs are being further classified on the basis of urban area, urban enterprises and rural enterprises. So the person who are working in the urban areas, working in the cities, working, having the promotion level on that particular ways, having considerable easy cash on delivery and all. So all things are easily managed out by the urban. Then rural entrepreneurs, the marketing is not that easy, promotional level activity is not that easy, customer is not that much paying. So we can have a general description about the area wise accordingly and entrepreneurs for those particular things. Okay. And the last on the basis of scale. On the basis of the scale, entrepreneurs are further classified, that is the large scale industry entrepreneurs, medium scale industry entrepreneurs, small scale industry entrepreneurs, and the tiny industry entrepreneurs. Tiny industry just having a single machine and working out on that basis,
a single small area. Small scale industry around 10 to 20 workers are there, 3 to 4 or 5 machineries are there. Medium scales around hundreds of workers are there, having a small scale unit kind of that. This is going to work out. यानी कि आप मान सकते हैं कि 1000 गज के अंदर वर्क कर रही है. Large scale industry, and the acres, number of acres of the land is there with them. Thousands of the employees are there. Shifts are going on. Number of machineries are there. So that's the large scale industry. So on the basis of the industry level scaling of the industry, on that basis, entrepreneurs are further classified. So this is about the classification of the entrepreneurs on the various bases. So you can just note down a short form which I had created of these 9 classification, that is MCD, STD, BAG. Note it down, MCD, STD, BAG. This is the short M form of MCD, STD, BAG, BAG. So this short form stands for, M stands for motivation, on the basis of motivation. C stand for capital ownership, जो आपने अभी पढ़ा था, private, state, and the joint. Next, D stands for the Danhoff. On this basis, we described it up. Next is STD. S stands for the scale, that is small scale, large scale, medium scale. T stands for the basis of technology, that on the basis of technology, entrepreneurs are being classified. Next, D stands for the development. On the basis of development, that is the first generation, second generation, and the classical entrepreneur. And the last one is BAG. B stands for the business. They're the very first on the basis of their business. A stands for the area, urban area, rural area. And the last G stands for the gender and age. So I hope so this short form must be able, you will be able to remember that for the classification of entrepreneurs, that is MCD, STD, BAG, which is going to define out the all these variations. I hope this will be okay to you guys. Yes, any replies, please? Yes, sir. Yes. Okay, that's good, Mayank. Only Mayank is listening to me, I hope. नहीं सर. Okay, Arun is listening. That's good. सर एक वो डी बताना है, एमसीडी वाला डी. एक तो डेवलपमेंट था और सेकंड कौन सा? Danhoff. One is on the basis of development and one is on the basis of Danhoff. That is the particular person who was researching it out, and on that base, on his own behalf, he had fabricated or classified the you can say the entrepreneurs on his own terms. That is innovating entrepreneur, जो कुछ innovate करता है. Imitating entrepreneurs, जो easily market में उसकी ready रहता है, उस जो नया innovation आता है उसे adopt करने के लिए. Fabian entrepreneurs, Fabian entrepreneurs are those जो experimental level पे changes out करता नहीं है, just जिस तरीके से अपना business चल रहा होता है उसे वैसे ही चलाता रहता है, उसमें उसके process में अपने product में कोई changes नहीं लाता. So that are the shy or the lazy entrepreneurs. That's why they are being known as the Fabian entrepreneurs. And the last one is the drone entrepreneur. Drone entrepreneurs कौन से हैं? जो refuse कर देते हैं नई नई technologies, नई नई opportunities को adopt करने में, उन formulas, new conducting production ways को, जिससे उनकी cost बच भी सकती है, but still they deny that. So that's why they are the drone entrepreneurs. So these are the various ways according to the Danhoff they have classified the entrepreneurs. Okay. So now moving on to the next topic, that is intrapreneur. Intrapreneur was coined in the United States of America in the late 70s. Gifford Pinchot defined entrepreneurs as the person who resigned from their well-paid executive position to launch their own ventures. कौन लोग होते हैं जो एक वेल पेड एग्जीक्यूटिव जॉब जो पोजीशन लेकर के काम कर रहे होते हैं उसे छोड़ करके अपना एक वेंचर स्टार्टअप करने का सोचते हैं.
Gifford devised the way by which such executives could be retained in the industry. क्या ऐसे तरीके हैं कि ये जो उनसे लोग हैं एग्जीक्यूटिव्स हैं अपनी इंडस्ट्री में हम रिटेन करके रख सकते हैं, यानी कि उन्हें अपनी इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके रख सकते हैं? ऐसा क्या हो सकता है? एंड देयर एंटरप्रेन्योर अर्ग ऑल्सो, यानी कि उनके जो अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना जाग रही है, दैट दे वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, उस चीज को भी कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? बाय देयर बॉस। अंडरस्टैंडेबल। एंटरप्रेन्योर कौन है? कि जो लोग एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहे होते हैं या अच्छा काम कर रहे होते हैं, बट दे हैव सम काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट दे वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो उस फीलिंग्स के साथ वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। गिफर्ड क्या कहता है कि ऐसे एग्जीक्यूटिव्स को हमें छोड़ना नहीं चाहिए बिकॉज दे आर वेरी मच वर्केबल। सो हाउ वी आर एबल टू रिटेन देम इन आवर इंडस्ट्री, हम उन्हें अपनी इंडस्ट्री के साथ कैसे जोड़े रख सकते हैं? सो जो उनकी फीलिंग्स है एंटरप्रेन्योर बनने की, हम वो भी रख लें उनके साथ और अपना आदमी भी ना जाने दें। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉसेस, कि उनकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाए और हमारा एम्प्लॉय भी ना छूटे। दैट डिपेंड्स अपॉन देयर बॉस। सो द सिस्टम वाज डिवाइज्ड whereby such executives would operate as entrepreneurs with full independence and autonomy. इसका क्या निकाला गया? बॉस की तरफ से क्या निकाला गया? एक रिजल्ट निकाला गया कि इस तरह के एग्जीक्यूटिव्स को हम एक एंटरप्रेन्योर दे सकते हैं एज एन वर्किंग आउट, कि उन्हें एक फ्रीडम दे दें इस पर्टिकुलर किसी भी जोन में काम करने की। उन्हें एंटरप्रेन्योर की फील भी आ जाएगी एंड दे वुड बी ऑन द सैलरी बेसिस, और इस तरह से हमारा आदमी भी लूज नहीं करेंगे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन। So let's find out the difference that what is between the entrepreneur and the intrapreneur. An entrepreneur is the independence. An entrepreneur is an independent person who starts his venture, bear the full risk of his failure, and enjoy the fruit of his success, whereas intrapreneur is a partially dependent and is sponsored by the corporation in which he is working. So he is not liable to bear any kind of a losses in case of failure. I hope so this difference will be defining you out the clear that how intrapreneur is different from the entrepreneur. Entrepreneur कौन है? जो खुद ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैनेज आउट कर रहा है, जो खुद ही सारे रिस्क बियर कर रहा है और फुल्ली इंडिपेंडेंट है अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए, दैट इज द एंटरप्रेन्योर। बट इंट्राप्रेन्योर कौन है? जो कि पार्शली इंडिपेंडेंट है, यानी कुछ डिसीजन उसे अपने बॉस से पूछ करके ही लेने पड़ेंगे। वो किसी भी रिस्क में नहीं है, कोई भी लॉस उसे बियर नहीं करना। क्यों? पैसा किसका लगा हुआ? सारा बॉस को लगा हुआ है। ही इज जस्ट वर्किंग एंड टेकिंग अ फील ऑफ एन एंटरप्रेन्योर दैट हाउ द थिंग्स टू बी कैरिड आउट, जो कि सारा स्पॉन्सर किया गया उसके बॉस के द्वारा। सो दोज पर्संस आर नोन एज इंट्राप्रेन्योर। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू गाइस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you for your feedback. Let's continue to the second point. An entrepreneur raises the finance from various sources and also guarantees their returns, whereas entrepreneur does not have own responsibility to raise the capital or to return it. एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस अरेंज करना है, सोर्सेज अरेंज करने हैं और अपनी रिटर्न्स भी निकाल करके लानी है, वो सारी जिम्मेदारी एंटरप्रेन्योर की है। बट इंटरप्रेन्योर पे ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि उसे फाइनेंस मैनेज आउट करना है, कंपनी रिटर्न दे रही है या नहीं दे रही है। ही इज नॉट बॉदर्ड बिकॉज ही इज डूइंग अ जॉब बट टेकिंग द फील ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो दैट इज द इंटरप्रेन्योर। थर्ड पॉइंट, एंटरप्रेन्योर हैज नो रिलेशन विद एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो खुद का बिजनेस ही सेटअप कर रखा होता है, उसका किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता कि दैट दे आर सपोर्टिंग टू देम, नो। बट वेयर एज इंटरप्रेन्योर ऑपरेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक उसी कंपनी का हिस्सा होता है जिसमें वो पहले काम कर रहा होता है, ऑपरेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर इज वर्किंग, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट ही होता है, एक जस्ट यू कैन से एक जोन अलग कर दिया जाता है जिसमें कि वो एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहा होता है, बट इट दैट यूनिट इज आल्सो इटसेल्फ द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, so that's why it's the intrapreneur. So this is the intrapreneur that's working it out.
Okay, I hope this is clear to you. Yes, guys. Yes, sir. Okay, so moving on to the next topic, functions of an entrepreneur. नाउ जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे दैट ही शुड बी इनोवेटिव क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग ऑल सच काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वर देयर व्हिच वी हैड स्टडीड कि एंटरप्रेन्योर्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए दैट टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर सो व्हाट आर काइंड ऑफ द फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर अब एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस भी उसी बेसिस पे रहेंगे इनोवेशंस दैट इज द फर्स्ट फंक्शन कि इनोवेट क्या करना है उसे कुछ प्रोडक्ट इनोवेट करना है सर्विसेज इनोवेट करनी है या न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल अगर जहाँ पे कहीं प्लास्टिक लग रहा है वहाँ कहीं रबर से काम कर ले सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनोवेशन या कोई नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहा है दैट इज ऑल्सो एन इनोवेशन सो दैट on that behalf it's working it out there is a great deal of confusion and contradiction in the literature on the functions of the entrepreneurs इस चीज में बहुत सारी कंफ्यूजन्स रह जाती हैं और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि फंक्शंस क्या हैं एंटरप्रेन्योर के बट बेसिकली द फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इज innovations innovations J.S. Compter has made substantial contribution to the literature of entrepreneurship. The process of innovation may be in the form of introduction of the new product, use of new methods of production यानी कि उसने कुछ प्रोसेस में चेंजेस किए, ओपनिंग ऑफ अ न्यू मार्केट कुछ मार्केट ही नहीं ओपन कर दी जैसे हमारी ऑफलाइन मार्केट्स थी ऑनलाइन मार्केट्स आई इस तरह से व्हाट्सएप मार्केट्स भी आ चुके हैं फेसबुक मार्केट्स भी आ चुके हैं सो ओपनिंग ऑफ द न्यू वे ऑफ मार्केट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि नया रॉ मटेरियल सप्लाई करने नए रॉ मटेरियल की इंट्रोडक्शन ऐसी करी गई कि जिसका वो यूज कर सके और अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बना दी दैट वाज द फर्स्ट function of the entrepreneur. Next is risk taking. Richard Cantillon states that the entrepreneur is an agent who buys the means of production at a certain prices and sell them at uncertain prices. यानी कि एक certain price पे वो purchase करता है और uncertain prices पे sell out कर देता है whether it's low or high from the certain value of the amount. So the entrepreneur performs the function of reducing uncertainty in his plan of investment and expansion of the enterprise. यानी कि ये वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक अनसर्टेनिटी अपने प्लान के इन्वेस्टमेंट में दूर करते हैं और अपनी एंटरप्राइज के एक्सपेंशन में काम करते हैं those are the risk taking as the function of the entrepreneur. As per the JBC also stresses risk taking as a specific function of an entrepreneur. यानी कि ये stresses भी है risk taking जो stress भी provide करता है. It's a specific function for the entrepreneur. Next one is decision maker. Entrepreneur as a decision maker describes the following functions of an entrepreneur. The first one is determination of objective of an enterprise and the change those objectives as the conditions required or made advantages. यानी कि कुछ जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो कुछ डिटर्मिनेशन कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप की जाती है तो वो उन्हें डिटरमाइन उसी डिटर्मिनेशन में रहता है कि दैट आई हैव टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स फॉर माय एंटरप्राइज but it changes the objectives of the enterprise as per the times, as per the conditions, as it can be advantages to their enterprises according to the time. So that means if you can normally take an example of this pandemic, that normally business run हो रहे थे इससे पहले, but certainly COVID comes up in India also, conditions get changed. So still हमें enterprise run करनी है तो how is the way we are able to run it? So they have to change out their objectives उन्हें अपने objectives change करने पड़ेंगे because without changing the objectives they are not able to maintain that. So what they do, they had changes out the criteria, working days normal करे और alternatives करे, salaries में भी cut आया because objectives भी उन्हें follow out करने हैं, market में promotion करनी है तो offline छोड़ करके अब online शुरू कर दी. So this is how they are able to go out with that particular thing. Okay.
So these are the determination of the developments. Moving on to the next point, the development of an organization. The development of the organization including efficient relations with subordinates and the employees. यानी कि organization की development किस तरह से included है कि आपके पास efficient relations with your subordinates, यानी कि आपके जो juniors हैं, आपके नीचे जो काम करते हैं लोग, आपके साथ जो काम करते हैं या आपके साथ काम करते हैं या आपके juniors या आपके colleagues जो भी हैं उनके साथ एक healthy relationship आप settle out करके रखते हैं. So that is also development of an organization. Basically this is the point which works for every organization. ऐसा नहीं है अगर structures follow out किए जाएंगे तो सिर्फ duty होगी, but when a relationship is being developed up, then there is duty will not be like a duty, it will be like a friend's contribution towards the growth of the organization as well as their own. So this is the main point which works out basically. Now, third point is that securing adequate financial resources, the relations with the existing and the potential. यानी कि अब हमें financial resources भी maintain करने होते हैं. That is also a part of our decision maker. कि किनके साथ हमें relations जो हमारे existing हैं उनके साथ भी हम एक healthy relation set up करके रखें. Plus जो potential है, plus those potential organizations जिनके साथ हमें tie up करना चाहिए, they can support our organization. So in that way also we have to maintain those particular relations with the other financial resources organizations. So the next is potential investors basically. The next point is acquisition of efficient technology equipments and the revision of the new machinery appears. यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही हैं हमें उन चीज़ों को साथ साथ एक्वायर भी करना चाहिए. एंड रिवीजन ऑफ द न्यू मशीनरी अपीयर्स, यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी के साथ मशीनरीज आती जा रही है हमें उन्हें स्लोली एंड स्लोली उनको भी अपनी रिविजन्स में लाना चाहिए कि पुरानी मशीनरी निकाल करके हमें नई मशीनरीज भी इंट्रोड्यूस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करनी चाहिए. The next one is development of the market for the product and the devising of a new products to meet or anticipate consumer demands. यानी कि मार्केट के अकॉर्डिंगली भी हमें रन आउट करना चाहिए, नई नई डेवलपमेंट्स अपने प्रोडक्ट्स के अंदर लानी चाहिए, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए सो दैट कि जो भी कस्टमर की नीड्स हैं वो हम फुलफिल कर सकें. बिकॉज अगर कहीं पे भी हम पीछे रह जाएंगे कस्टमर की नीड्स फुलफिल करने में, हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मात खाता चला जाएगा. सो दिस विल बी अ degrading the performance. So we have to continuously look out for the development of our products and the services to meet the customer requirements. अभी तक का क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Okay, let's, and the last point is the maintenance of good relations with the public authorities and with the society at large. Maintenance of the good relations means that we have to be in a healthy relations with the persons who are publicly dealing out. Just like agar, we can say the public offices like MCD or the national authorities or the permission license and all. So all those इन सब चीज़ों के साथ हमें एक healthy relationship set up करके रखना चाहिए so that we can work it out on the telephonically basis and with the society at large, because society will be there that is going to promote your business. If you are giving out a good to a one particular, if one customer comes to you, you give a good deal to them, you deal with them a good behavior, they are the promoters of your product. So we have to be a very healthy relationship with the public dealings as well as the society also. And the last point in this is organization and management. Marshall recognized organization and the management of the enterprise as the important function of an entrepreneur. When the organization grow bigger, the entrepreneur effectively delegates authority and find the responsibility at the various level of the management. The network of the decision making becomes more complex. यानी कि क्या होता है,
ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर मार्शल के अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज आर द इम्पोर्टेंट फीचर. व्हाट इज दैट कि अगर जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती चली जाएगी वैसे वैसे डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी हमें और इंक्रीज करनी पड़ेगी एंड दैट विल गेट कॉम्प्लेक्स बिकॉज इतने सारे जोन्स को एक आदमी को संभालना मुश्किल हो जाएगा. सो व्हाट द एंटरप्रेन्योर्स डू, इट विल हायर द इफेक्टिव डेलीगेट्स अथॉरिटीज. वो क्या करेगा कि अपनी कुछ अथॉरिटीज जो उनसी फुल परमिशंस की हैं कुछ डेलीगेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा so that they can work it out. वो उन स्पेसिस पे जिनका सेम विजन है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोज हु आर हैविंग द सेम व्यूज, उन डेलीगेट्स को वो कुछ अथॉरिटीज असाइन कर देगा टू टेक द डिसीजन. जो पर्सन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर सकेंगे बिकॉज एवरी पर्सन, जब आप ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी, देयर शुड बी द परचेज यूनिट, देयर शुड बी द सेल्स यूनिट, देयर शुड बी द मार्केटिंग यूनिट, account section unit. So there are the various units working out on a single enterprise. So what they have to find out the responsibilities. तो बहुत बड़ी हो जाती है एक आदमी के संभालने के लिए. So what they do, they delegates को authorities assign कर देता है different different levels पे persons को authorities दे देता है to take the decisions. So this will help them to do out the things. But इन सब चीजों से क्या होता है, complexity बढ़ जाती है decision making की. सो हाउ दिस फंक्शन इंक्लूड्स कि प्लानिंग ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी कि जिस तरीके से प्लान होगा उसी के अकॉर्डिंगली ही डिसीजंस लिए जाएंगे. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल. सो एंटरप्राइज जो सा एंटरप्रेन्योर है उसके लिए क्या आ जाएगा काम, सिर्फ देखने का काम आ जाएगा. रेस्ट the coordination between the employees, administration and the control, that all will be going on with that. Just he has to observe and check out the things that everything is under control, administration is working as per that, the coordination between the employees are going on. And the last part is routine type supervision, यानी कि जो उनसे एंटरप्रेन्योर होगा उसे डेली सिर्फ सुपरविजन रखनी होगी सबके ऊपर, दैट एवरीबडी इज वर्किंग, every delegate is working and every delegate is taking the proper decisions for their employees and for the growth of the organization. Just he has to observe that way. So that are the functions of entrepreneur. So with this we finished up the functions of the entrepreneur. I hope this topic is clear to you. If you are having any kind of a problem, please have your questions. No, sir. Okay, thank you. Moving on to the next topic, that is distinction between an entrepreneur and a manager. Entrepreneur. First one is status. An entrepreneur is the owner of his enterprise. He makes his own investment and own his business. Whereas the status of manager is, a manager is just an employee in the organization or in the enterprise which is owned and run by the entrepreneur. यानी कि manager क्या है, एक employee की तरह काम करता है, entrepreneur works like a boss. Next is target. The main target of the entrepreneur is to start his ventures by setting up as a sole trader firm और अ कंपनी. यानी कि टारगेट क्या होता है एंटरप्रेन्योर का कि वो खुद ही सारा कुछ सेटअप करे एंड होल सोल इन चार्ज हो, चाहे वो ट्रेडर बनेगा, चाहे वो कोई फर्म खोले, चाहे वो पूरी कंपनी खोले. बट ही हैज हिज टारगेट इज लाइक दैट ही शुड हैव हिज ओन वेंचर और एंटरप्रेन्योर काइंड ऑफ दैट. Whereas the manager is, the main goal of manager is to, motive of the manager is to give his services. यानी कि वो अपनी services provide करेगा enterprise को, ventures को, settled up by the someone else, that is an entrepreneur. यानी कि manager कौन होता है, वो जो अपना experience, अपनी studying और अपना जो उसने पढ़ा आज तक, जो उसने experience लिया है companies में different organization में काम करके, वो services provide करेगा उस organization को. Next is entrepreneurs. Entrepreneurs is decision making. The third point, decision making. All the policies and the strategic decisions, like those comprising the expansion, diversification, takeover, will be taken by the entrepreneur. Whereas the manager
while all those managerial operational decisions which would have the impact on the short term or the medium term results would be taken up by the managers. यानी कि एंटरप्रेन्योर्स के डिसीजन क्या रहने वाले हैं कि क्या क्या पॉलिसीज फॉलो करनी है, क्या स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने हैं जिससे कि कंपनी और ग्रो कर सके। किसी और जोन में अगर डाइवर्सिफिकेशन यानी कि किसी और जोन्स में भी अगर हमें हाथ आजमा के देखना, सो वी कैन मूव टू दैट पर्टिकुलर जोन ऑल्सो। टेक ओवर यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को हमें हायर करना है, टेक ओवर करना है, सो दैट वी कैन वर्क आउट, वी कैन क्रिएट आवर मोनोपोली इन द मार्केट। सो दैट इज द डिसीजन टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर्स। मैनेजर्स के डिसीजन मेकिंग किस लेवल के हैं, दैट कुछ मैनेजरियल कुछ मैनेज आउट करना है या ऑपरेशनल लेवल पे कुछ डिसीजंस लेने हैं, those kind of a decision which having the short time results or the medium time results of a time, that is being taken up by the managers. Next is rectification of wrong decisions. The wrong decision taken by the entrepreneur may not be rectifiable or may result in losses or even closing of the unit also. यानी कि अगर एंटरप्रेन्योर अगर गलत डिसीजन लेता है तो शायद वो ठीक करने लायक सिचुएशन में नहीं होंगे, और मे भी हो सकता है कि वो बहुत बड़े लॉस में आ जाए, और मे भी हो सकता है कि उन्हें अपना यूनिट ही बंद करना पड़ जाए। बट मैनेजर्स के रॉन्ग डिसीजन क्या है, टेकन बाय द रॉन्ग डिसीजन बाय द मैनेजर्स कैन बी रेक्टिफाइड बाय द एंटरप्रेन्योर, यानी कि उसको अपडेट कर सकता है, उन्हें ठीक कर सकता है। कौन कर सकता है, दैट कैन बी डन बाय द एंटरप्रेन्योर। Next is innovations. An entrepreneur innovates and exploits his innovation commercially, यानी कि जो उसने innovation करी है उसे exploit करता है और promotionally और commercially उसे use करने के लिए exploit करता है। But whereas the manager level, the manager is merely an officer. Manager क्या है, एक officer है या executive है who is appointed for the promotion of the unit. यानी कि क्या कहते हैं, organization की promotion के लिए या किसी product की promotion के लिए for a particular unit a manager works out for that particular one. Next is risk bearing. An entrepreneur, being the owner of the unit, undertakes all the risk and uncertainty of running his enterprise. यानी कि सारा रिस्क किसका है, एंटरप्रेन्योर का है। कोई भी चीज़ है, अगर किसी चीज़ पे लेवल पे अनसर्टेनिटी आ रही है, वो सारा रिस्क और सारा ट्रबल और सारे लॉसेस किसके हैं, एंटरप्रेन्योर के हैं। But at the manager level, manager does not bear any kind of a risk because he is paid a fixed salary for that. Next one is skills. The skills expected from the entrepreneur are in the form of creativity, which we had studied, creativity, innovation, desire of high achievements, intuitions, etc. But the skills required for the manager depends upon the public dealing abilities and the conceptual abilities. Second last point, qualification. An entrepreneur does not need to have distinct degrees from the reputed university. यानी कि entrepreneur जो है उसे किसी डिग्री या किसी स्टडी की जरूरत नहीं है from the reputed universities, nothing like that. But managers have to get needed to possess degree in a particular stream in the of the management, whether the theory and the practice is also to be there with them. So this is the qualification part. Next is the rewards. The rewards of an entrepreneur is the profit earned by them. Rewards क्या हैं कि जो organization profit earn करेगी वही entrepreneur का profit है और reward है. But at the manager level, the monthly salary is only the reward in against of the services provided by him. यानी कि जो manager services provide करता है उसका reward उसकी सिर्फ fixed monthly salary ही है. So this is the distinction between the entrepreneur and the manager, which is working it out. Okay. So now the tips to become a successful entrepreneur. Acquire sufficient and all-around knowledge about the enterprise you intend to start. यानी कि पूरी sufficient knowledge ले ले, सारे उसके उससे जो टच अप में सारी चीजें होती हैं उन सब की knowledge लेना enterprise की. This is for the entrepreneur. Be conservative in calculating income and lavish in calculating expenditure. यानी कि बहुत conservative होना चाहिए अपने income को calculate करने में and lavish तरीके से वो expenditure को अपना check out कर सके. Don't expect quick and easy returns from the ventures. यानी कि जल्दी और
आसानी से पैसा ऑर्गेनाइजेशन कमा करके दे दे, ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर द डेलीगेशन ऑफ वर्क व्हेन नीड, यानी कि जो आपके विजन में लोग आपके साथ कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसे लोगों को हायर करने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। टेक मॉडरेट रिस्क, नाइदर टू हाई नॉर टू लो, यानी कि मॉडरेट रिस्क लेना चाहिए, ज्यादा कम वाला भी नहीं लेना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट हो तो भी आपको लगे ना, और इतना हाई भी नहीं लेना चाहिए कि आपको नुकसान हो तो यू विल बी गेट सम डाउन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्लान सिस्टमेटिकली एंड मार्च अहेड स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू द प्लान टू अचीव योर गोल्स, यानी कि अपने प्लान को सिस्टमेटिकली प्लान आउट करके लेके चले, स्टेप बाय स्टेप उसकी मार्किंग करके चलें और उसी के अकॉर्डिंगली चलें जिससे आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें। Next is time management. Time management is necessary to maximize utilization of resources. यानी कि अपना टाइम को मैनेज इस तरीके से कर सके दैट एवरी यूनिट को आप अपना टाइम दे सकें और सब लोगों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रखें, सभी रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूज कर सकें टू गेट द इफेक्टिव वर्क डन। नेक्स्ट इज कलेक्टिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स ऑन द कंटिन्यूस बेसिस, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या कर रहे हैं मार्केट में, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो आउट कर रहे हैं, क्या नया प्रोडक्ट लेके आने वाले मार्केट में, सो उन सब की प्रॉपर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर आउट होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट इज डोंट अवॉइड एंड रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, किसी भी मुश्किल कोई टाइम आए उससे भागने की जरूरत नहीं है, यू शुड फेस देम एंड you should be optimistic that one day you should be hopeful that this should be covered it out. Next one is take the help of the experts and the experienced persons और द एंटरप्रेन्योर्स व्हेन इन डाउट, यानी कि अगर आप किसी डाउट में किसी डिसीजन को लेने में आप प्रॉब्लम फेस आउट करें तो आप एक्सपर्ट्स ओपिनियन लीजिए, एक्सपीरियंस पर्सन जो उनसे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका एक्सपीरियंस लेकर के आप उस डिसीजन को कैरी आउट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ विद दैट दीज पर्टिकुलर 10 पॉइंट्स यू विल बी एबल टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। So now the final conclusion of the first topic is that the entrepreneur performs various types of functions. Growth of his enterprise depends upon the way he performs the various functions like innovation, risk taking, decision making and organization and management. यानी कि एंटरप्रेन्योर के वेरियस टाइप्स के फंक्शंस हैं उनके पास, बट डिपेंड किस पे करता है, जो चार फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए थे अभी, दैट इज द इनोवेशन, risk taking, decision making, organization and management. On these basis, this the working profile, or you can say the growth of the enterprise, or you can say the growth of as a personal level, this depends upon these particular four functions. I hope आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। Yes, sir. Yes, sir. If you are having any kind of a doubt, you may please raise your questions. Okay, attendance please. Archie, Mudita. Present, sir. Okay, Sir, she present. Mudita, Present, sir. Tanmay. सर विनीत Okay. प्रेजेंट सर। Okay, सर Tanmay. विनीत मिस कर दिया आपने। Okay, Nitish. Anjali Singh. Present, sir. Amisha. Present, sir. Anya. Present, sir. Shashank. Akash. Sir, Shashank present. Present, sir. Akash present, sir. Okay, and Shashank. Sir, Shashank. Yes, sir. Okay. Next is Pragya. Pragya Singh. Ritika. Present, sir. Shraddha. Present, sir. Harshit. Present, sir. Tanish. प्रेजेंट सर। Anushriya. Present, sir. Ansh. Mohit Agarwal. Harshit. Present, sir.
प्रणव, विपाशा, Present, sir. पीयूष, बबर, Present, sir. अर्पण, प्रेजेंट सर। विभोर, प्रेजेंट सर। प्रियांश, Present, sir. शिवेक, प्रेजेंट सर। हिमांशु, Present, sir. विराट, नव्या, Present, sir. मुस्कान, Present, sir. तरुण, Yes, तो आज की प्रेजेंट लगी है, नाम सुन लीजिए। आरशी, मुदिता, विनीत, तन्मय, अंजलि, अमीशा, तान्या, शशांक, आकाश, रितिका, श्रद्धा, हर्षित, सर तनुज, मयंक कुमार रह गया। मयंक कुमार। ओके, नेक्स्ट इज अनुश्रिया, प्रज्ञा भी प्रज्ञा की भी प्रेजेंट लगा दो, वो क्लास में थी, उसका माइक कनेक्ट नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ओके, next is Anushreya. After that, Harshit Pukhraj is there, Vipasha is there, Piyush, Mayank Babbar, Pan, Vibhor, Priyansh, Shivek, Himanshu is there, Navya is there, Muskan is there. That's it. सर अरुण। Arun. Okay, जी Arun. Lovely attendance. और कोई? Anyone left? ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा सभी को। अगर कोई डाउट हो तो कभी भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट्स के। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके सर।